Indonesia, and I'm with my friends from Indonesia too. We're in Gandhara Festival 2023 at Rawalpindi Art Council, and I'm with Flora and Dohan. you're watching Bright Face Pakistan or BFP TV. I'm so excited because more than 2 years I'm here. I rarely meet Indonesian people, and now I feel like half with my family because I meet them. So I will talk little maybe in Indonesian language. If you don't understand, then I will translate. Yeah. So I will explain a little bit about this Gandhara Festival 2023. It's about Buddhism culture. Explaining about their historical, Pakistan is a Islamic country, but how they're accepting other religions, other cultures, they make this festival about Buddhism. And you know why Indonesia have a style here? Because we have Candi Borobudur. Borobudur temple, one of 7 wonderful, magical in the world. So I will not talk again too much here, then the mic will be always in me. I will give to them, let them explain about the Indonesian style here. Okay, Mbak, how are you? I'm good. How are you, Ma? I'm also fine. Mbak in Indonesian language means sister, so I directly call her as my sister. And also I will say hi to Mas. Hai. Hai juga. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar means how are you? Yeah. In Pakistan, Kya hai? kya hai? And we will explain Metiko. Yeah, we little understand. Okay, so we're about joking always. Now we're a little serious, yeah? So Mas and Mbak, can you explain what's our Indonesian style here in this festival? Okay, then basically we come here on behalf on our embassy, Indonesian embassy. Then because the authority of this event held a Buddhism line, so Indonesia has joined because we do have a massive, wonderful candi or temple over here. And then we do also an introducing and promoting Indonesian destination here. Yeah. I will tell little bit joke, yeah. Like usually people will know Bali, but they will ask like, Bali is where in Indonesia? No, Bali is included in Indonesia. Bali is one of the province in Indonesia. So don't only know Bali, know many beautiful places also in Indonesia, not only Bali. Like now here, Borobudur, and then many other places also, beautiful places in Indonesia. So Mas, what do you want to say about? I just want to say, including we have also batik. Yeah, batik is similarities. Like Look. This is batik. Nah, Yeah. there's a store name here, batik. When I come here to Pakistan, I say what the name is batik. This is our clothes. It's our culture. Yeah. The traditional clothes. And we have similarities with Pakistan. And they said, and their name is Ajrak. Yeah, Ajrak is same like batik, but Ajrak is by stepping, but we are batik by hand drawing. Handmade. So can you see like really? Look, beautiful, yeah. Yeah. So awesome. I'm really proud again now. Yeah. So for how long you've been here? We've been separate, but actually we have been almost 2 years. Yeah. Almost 2 years. Yeah. So they know Urdu more than me. Tora. Me chota. Yeah. So there, what are you doing here in Pakistan? Yeah, basically we bought our student here in Islamic University Islamabad. We have same major as well in international relations in 3rd semester. Yeah. And then we here for helping our ambassador. Oh, I feel feel touched. Now I also I'm here working as a chartered accountant, but I rarely to join this kind of festival representing my country. Hopefully next time, someday I will be more frequent. Yeah, because actually like now I come here like no preparation. Even I don't know there is a festival like this. Then one of my friend, Mr. Salit Ayubawa, like Lia, you come here. Your country have a style here, so you interview them on behalf of us like this. Now then I'm directly come here quickly. Okay, so I want to ask again, how do you feel here living in Pakistan? You like to live here? Yeah, I like it. Yeah, so far so good when I live here. Yeah, so far so good. What do you like more? in Specifically samosa, I like that one. Oh, samosa. Biryani, palau, Kebab. Don't forget about kebab. Yes. In Indonesia we call it kebab. Indonesian people used to eat rice, cawal, yeah? So here in Indonesia we know fried rice, but here we know what? Biryani, palau. Then after that we like it so much, so tasty and so spicy. Then maybe sometimes we will forget our fried
rice. But and like no masala, no life. No life. So Indonesian people, we will eat rice. People usually rice with sauce. We're no sauce with rice, yeah. Because no, only joking, yeah. Nah, so after this we will like make a video of this tall sea, yeah, so beautiful. So Mbak and Mas, what do you want to say to our friends in Indonesia, to people here Pakistani, how they welcome us as a guest, and also to our friends in Indonesia, because you know sometimes kan they will feel, oh Pakistan, I'm sorry, yeah, like it's an unsafe country, don't come there, then you will come by body, you will get back by name, like this for example, yeah. Nah, but we already see here three of us safely, healthy, and maybe too much healthy for me, so become bigger. Then we are happy also to be here. So any message for our friends outside there? Yeah, the first is don't too much trust the media, because when you visit Pakistan, actually like we easily meet a sister and brother, because we do have some background as a Muslim, right? Yeah, that's one. And then we will so glad to have Pakistani to traveling to Indonesia. Yeah. So we do so proud if you want to visit our country. Yeah, I think it's Aminah. Say. Yeah. You know, Indonesia is the biggest country, number 1 in the world for population of Islam. Number 2 is Pakistan. So if I see from the news from internet, yeah, they used to say Indonesia, Pakistan brothers. Every time if I meet like here Pakistani, oh you're my sister, you're my brother, or you're my guest, come on eat. Nah, that's why they're here. We're offering them for a dinner. I will just tell you something. Let's have a dinner. Let's have a chai. Oh sir, madam, we're already too much full, because maybe people come here, they see they're foreigners, nah? Then they will like say, okay, you're our guest. This is biryani for you. This is pulau for you. This is samosa. This is whatever it is. So they already full. They don't accept again our our offering, but it's okay, nah? We still love Pakistani foods, yeah. So Sweet girl and my son, you like after your education, you like to leave Pakistan and job or going back to your country? Well, you? Okay, for me, actually, I will be so proud if I could be one of the Indonesian ambassador in Pakistan. Amin. Amin. Inshallah. Me too. I would like to represent Indonesia as the diplomat in Pakistan. Inshallah. We will pray the best for them, yeah. So someday they will become diplomatic and ambassador. Oh, so nice. And I will be still chartered accountant and audit. Okay, so Leah, yes. we hope that recently we have 2 more Indonesian. Yeah. Because it's proven here we're safe. So come to Pakistan without any doubt. Yes. Don't believe always like swallow whatever media outside there, like Pakistan is terrorism, whatever it is. No. We're safe here. We love to go to the nature. Indonesia only have summer, yeah? Here we have 4 seasons. Now we're in winter, so we enjoy snow. So we make jealous our friends there, okay? No. Now the big will be to Mr. Said. Here or go out? जी मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ ये इंडोनेशियन बच्चे बच्चियाँ और हमारे इस्लामिक ब्रदर कंट्री से रेलेवेंट हैं, और हमारा इनका बहुत सारा प्यार है, कल्चर है, सकाफत है, ड्रेसिंग है। और लिया चूँकि मेरे आप बेशुमार इंटरव्यूज़ में, प्रोग्राम्स में लिया को देख चुके हैं, तो आज लिया भी साथ आ गए। इसको भी अपने इंडोनेशियन साथियों को देख के खुशी हुई। आज हमने आपके लिए ये थोड़ी सी चिट चैट जो की, उसका मकसद ये था कि ये लोग इंडोनेशिया से आए हैं, यहाँ स्टडी कर रहे हैं। लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जॉब कर रही है। तो दुनिया को ये लोग इंग्लिश में ये बता रहे थे, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत मोहब्बत करने वाला मुल्क है, और पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ऐसा टेररिज्म नहीं है जो कि हम ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़ को स्पेशली, और कॉमनली जो यूरोपियंस आते हैं, जो दीगर अमेरिकन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, तो वो पाकिस्तान
पाकिस्तान में कंफर्टेबल फील करते हैं। चंद अनासर ऐसे ज़रूर हैं, वो इंडोनेशिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, जिन्हें हम जुनूनी कह सकते हैं, दहशतगर्द भी नहीं कह सकते। उनका ब्रेन जो है वो चेंज किया जाता है और वो ब्लास्टिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो उनका आम पाकिस्तानियों से, आम इंडोनेशियन से, आम यूरोपियन से किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मेरे बच्चे इंडोनेशियन स्टूडेंट यहाँ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने आपको इंग्लिश में ये बताया कि ये बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं पाकिस्तान में। लाइक लिया, हमेशा लिया का एक्सपीरियंस होता है कि जहाँ भी लिया जाती है, ये इंडोनेशियन बच्चे जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो इनके चेहरों से पता लगता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो लोग इनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो ये बताते हैं कि हम इंडोनेशिया से पाकिस्तान में स्टडी करने आए हैं। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इनसे फूड के पैसे नहीं लेते, ट्रैवलिंग का किराया नहीं लेते। तो मैं उन पाकिस्तानियों को आज सलूट करता हूँ जो पाकिस्तान को इन बच्चों के सामने इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि ये आगे मुझे इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि हमारा दिल चाहता है कि हमारे इंडोनेशिया के सब स्टूडेंट लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से स्टडी करें। आप लोग जो नहीं जानते उनको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि हमारी जो काकूल आर्मी है, एकेडमी है, PMA काकूल पाकिस्तान पैरामेडिकल एकेडमी जो है PMA काकूल, इसके अंदर ब्रिटिश आर्मी के लोग आके ट्रेनिंग हासिल करके जाते थे। श्रीलंका, ईरानी, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन, दुनिया से लोग पाकिस्तान में आते थे हमारी अस्करी तरबियत के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। इवन चाइना आज दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। तो आपको मैं बताऊं, माओ ज़ेडुंग हमारी कराची की स्टील मिल के अंदर 6 साल जॉब करके गए और बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। ये आपके लिए भी हैरत की बात होगी। इसी तरह इंडोनेशिया के बहुत सारे लोग हैं, अरब इमारात के बहुत सारे बड़े बड़े इस वक्त मिनिस्टर हैं, शहजादे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के इस वक्त मिनिस्टर्स हैं। वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ कर गए हैं, पाकिस्तान में जॉब्स करके गए हैं। तो हम सब लोग पीसफुल लोग हैं और आज इन्होंने आपको ये मैसेज दिया कि आप आए पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान में ही ना आए, इन्होंने पाकिस्तानियों को भी दावत दी कि आप इंडोनेशिया आएँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा टॉम जो है हिस्टोरिकल प्लेस, उसका इन्होंने यहाँ मॉडल लगाया हुआ है। इसके अलावा एक रिच कल्चर है इंडोनेशिया का भी, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन के आबादी के लिहाज से इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है। तो ये मालूमात, ये गपशप हमने आप तक पहुँचाई। आपको कैसी लगी, हमें इस बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देनी है। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।